Bismillahirrahmanirrahim. My dear secondary students, our today's chapter is chapter number 8 of the novel Goodbye, Mr. Chips by James Hilton. And this chapter is very important because of the Catherine Bridges' tragic death. And we will also discuss what were Chip's feelings on the death of his wife, who was Faulkner, and also what type of letters did Chips receive on the 1st April 1898, and also we will discuss some terms as April foolery, stumble, chaplain, or chapel. Now we are starting Catherine Bridges' tragic death. It was a spring day in 98. Mr. Chips was 50 years old. He had walked through Brookfield village. He was disturbed, rather badly shaken. He was struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. He had to exclaim, "My wife is dead, and my child is dead, and I wish I were dead myself." The mother and the child just born had died on the same day, on 1st April 1898. It was the biggest piece of April foolery. बच्चों इस नावल में दो चैप्टर्स जो हैं वो अलमनाक वाक़यात जो हैं बयान करते हैं। एक चैप्टर आखिरी जिसमें चिप्स के इंतकाल कर जाने का ज़िक्र है, और एक ये चैप्टर जिसमें कैथरीन की मौत का ज़िक्र है। 1 अप्रैल 1898 को बच्चे को जन्म देते हुए कैथरीन का इंतकाल हो गया। वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इसी तरह उस रोज़ से मिस्टर चिप्स के साथ किस्मत ने भयानक मजाक किया। उस रोज़ अपने आप को काम में गुम करने की गर्ज से चिप्स क्लास में आए, लेकिन सही तरह से पढ़ा ना सके। इसलिए उन्होंने लड़कों को काम करने के लिए कहा और ख़ुद खामोशी से डाइस पर खड़े रहे। फिर किसी लड़के के कहने पर उन्होंने देखा इन्हीं के नाम बेशुमार खतूत आए जो उनके पुराने शागिर्दों ने अप्रैल फूल बनाने की गर्ज से भेजे थे। हर लिफाफे के अंदर खाली कागज़ था। मिस्टर चिप्स इस मजाक से सही तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सके, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर तो अपने बच्चे को और अपनी बीवी को याद कर रहे थे। देयर आर सम terms that are discussed as chapel. Chapel is a place of Christian worship attached to a private house, hospital, school, or college. Worship in a chapel is usually less elaborate than worship in a church. The clergy in charge of the service in a chapel is called chaplain. यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ही बना हुआ एक छोटा सा चर्च था, और वहाँ पर रवाज है कि स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो, ठीक है, उसके साथ ही एक छोटा सा वो चर्च बना देते हैं जहाँ वो इबादत करते हैं। स्टम्बल, दिस वर्ल्ड हैज़ टू शेड्स, मूव और वॉक in an unsteady way and speak in a hesitating way with pauses and mistakes. Here, both the shades are correct. इसका मतलब ये है बेटा, इस लफ्ज़ के दो मतलब हैं, एक लड़खड़ाना और दूसरा सही तरह से ना बोल सकना। यहाँ दोनों मतलब ही दुरुस्त हैं इस रेफरेंस के अंदर। अप्रैल फुलरी, it means playing tricks on the first day of April is a custom among the European nations. In France, the victim of such practical jokes is called an April fish. In Scotland, a cuckoo. And in English-speaking countries, an April fool. यहाँ पर बेटा इसका मतलब ये है कि यूरोपीय अक़वाम के अफराद 1 अप्रैल के मौका पर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल मजाक करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जैसे कि
कि फ्रांस के अंदर जो इसका अप्रैल फुलरी का शिकार होता है उसको फिश कहते हैं, स्कॉटलैंड के अंदर वो कुकू कहते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर एन अप्रैल फूल कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस what were Chip's feelings on the death of his wife. Mr. Chips was disturbed, rather badly shaken. He exclaimed, "My wife is dead, and my child is dead, and I wish I were dead myself." It happened on the 1st April 1898. As such, it was the biggest piece of April foolery. Now, we will discuss who was Faulkner. Faulkner was the small boy who met Chips when Chips was returning from Brookfield village. Kathrine had died. The boy wanted to get short leave. And this is also very important. What type of letters did Chips receive on the 1st April 1898? Chips was totally disturbed because of the death of his wife. It was the 1st of April. His old students sent him letters. When he opened them, they all contained a blank sheet each. Okay, beta, enough for today. Allah Hafiz.